क्योंकि उन्हें इस पाठ में फ्रांस के एक स्टूडेंट को, जिसको फ्रेंच नाम से सिंबलाइज किया गया है, प्रतीक के रूप में रखा गया है, और उसी को लेकर के ये पाठ रखा गया है। तो उस दिन जब ये फ्रांसीसी विद्यार्थी को रोकता है कि अभी बहुत सारी समय है विद्यालय जाने के लिए, तभी ये बुलेटिन बोर्ड पर जो है सूचना पड़ा, कोट था, रंग बिरंगी शर्ट थी और एक ऋषि टोपी थी जो पूरी तरह से पढ़ाई की हुई थी। उसको वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय पुरस्कार के दिनों के अलावा। और इस फ्रांसीसी विद्यार्थी ने क्या देखा कि यम हैमेल नीचे जो लैंग्वेज के अध्यापक थे, बल्कि शांतपूर्वक बैठ जाने के लिए कहा। ये जो बालक था, फ्रांसीसी विद्यार्थी, वहां पर ये देख करके दंग रह गया कि पिछली सीट पर जो सामान्यतः खाली हुआ करती थी, आज गांव के बड़े बूढ़े लोग वहां पर बैठे हुए थे। और यम हैमेल ने उस दिन जो है सभी विद्यार्थियों को फ्रांसीसी भाषा के महत्व पर पाठ पढ़ाया और उन्होंने बताया कि जो फ्रांस की भाषा है वो सबसे आसान, सबसे है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है और है वो एक माध्यम होती है उस देशवासियों के लिए उस कैद से बाहर आने का जब वो गुलाम हो जाते हैं। उस दिन यम हैमेल बच्चों के लिए बड़ी ही सुंदर सुलेख के लिए कापियां लाए हुए थे, जिस पर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। और सभी बच्चे जो है पूरी तरीके से उसको लिख रहे थे। इतने तल्लीन थे कि उन्हें किसी भी आवाज पर कोई आकर्षण प्रतीत नहीं होता था। तभी यम हैमेल ने ये घोषणा कर दी कि ये उनका अंतिम पाठ है। जैसा कि बादल से आदेश आया है कि अगले दिन से फ्रांसीसी भाषा के बजाय यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और एक नए टीचर यहाँ पर आकर के अध्यापन का कार्य करेंगे। जैसे ही वो विद्यार्थी शब्द को सुनता है, उसके अंदर बिजली दौड़ जाती है और यम हैमेल के शब्द याद होने लगते हैं। जब यम हैमेल ने उससे कहा, कहो, आप तो कहते थे कि अभी पढ़ाई के लिए बहुत समय है, लेकिन देखो आप ये कहा था, लेकिन आपके माता पिता ये चाहते थे कि आपको पढ़ाई की बजाय किसी फैक्ट्री या कारखाने में का दोष मेरा भी है, क्योंकि जब मुझे कहीं जाना होता था तो मैं आपको छुट्टियां दे देता था या फूलों या पौधों के लिए कह देता था, तो इसलिए हम सब दोषी हैं। लेकिन दुख की बात है कि आज हम ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अब हमें विद्यालय छोड़कर जाना होगा। और मेरे लिए दुख की बात है कि जो अल्सास के लोग हैं वे सही से फ्रांसीसी भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना भी नहीं जानते हैं। वो फ्रांसीसी जो विद्यार्थी है वो बहुत दुखी हुआ कि जब उसने पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया और वो सारी किताबें जो उसे बोझ लग रही थी, अब उसके जीवन का अहम हिस्सा बन गई थी और अब उन्हें नहीं छोड़ना चाहता था। और यम हैमेल का ये निर्णय कि अब वो अगले दिन से क्लास नहीं लेंगे, ये उसके लिए अब बहुत बड़े दुख की बात थी। सभी लोग क्लास में पूरी तरीके से दुखी थे, निराश थे और लोगों की आंखों में आंसू थे। वैसा यम हैमेल को उस दिन विदाई देने के लिए बैठे हुए थे, जो उनकी 40 साल की वफादारी पूर्ण सेवा थी। इतनी बातें हो रही थी, उसके बाद में जो है सभी लोग दुखी हुए। तभी चर्च की घंटी में 12 बजे और उस घंटी का संकेत हुआ और यम हैमेल ने भी दुखी मन से इशारा कर दिया। सबसे पहले तो उस कुर्सी में खड़े हुए और बोर्ड पर जितना अधिक उनसे हो सका उन्होंने शब्द लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रांसीसी भाषा अमर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने ये संकेत कर दिया कि विद्यालय का अध्ययन कार्य समाप्त हुआ और वे सब जा सकते हैं। फ्रांसीसी
विद्यार्थी को हमेशा इस चीज का मलाल रहा कि काश वो पहले पढ़ लेता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया जहां पर अब उसे गुलामी के अंतर्गत रहना पड़ेगा और अपनी भाषा से भी अपने आप को हाथ धोना पड़ेगा। तो जिस आपको पता ही है पाठ का नाम। अब ये जो अंतिम सीख नामक पाठ है, किसी भी भाषा को अपने आप में उस देश के लिए वो माध्यम है जो संप्रेषण का एक दूसरे से संचार करने का एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक शेयर कर सकते हैं और एक नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं और अपने राष्ट्र को, अपने देश को बचाए रख सकते हैं। ये भाषा है जो लोगों को दूसरे से जोड़ती है और उन्हें इकट्ठा करती है। तो ये जो लेसन है वो पूरी तरीके से इस चीज को बताता है कि भाषा या शिक्षा कितनी जरूरी है। अगर हम शिक्षा से दूर हो गए तो स्वाभाविक रूप से हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। शिक्षा नितांत आवश्यक है किसी भी चीज को समझने के लिए, एक दूसरे तक पहुंचने के लिए, और उसमें भाषा का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है। तो ये जो पाठ है इस प्रकार से सीख देता है कि हमें सर्वप्रथम शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए और भाषा का पूर्णपेण विकास करना चाहिए। तो ये इस पाठ की संधि थी जो आपको हिंदी में बताया गया। अब इसको इंग्लिश में डिक्टेट किया जाएगा। द लास्ट लेसन इज a very important one by Alfonso Daudet, where he describes about the two districts in France, Alsace and Lorraine, where these two districts are seized by the Prussian ruler Bismarck, and in his leadership there was an order from Berlin for all those districts, especially for the schools, that the French language will not be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Rather, the Berlin language will be taught. MML has to depart the next day, and the new teacher will join the school next day. So this was the day of the last lesson, and a French student reached the classroom where ML was already started, already on his way to teach. Yamal was dressed beautifully in green coat with felt shirt and a white black silk cap all embroidered. He was very serious and solemn. The class was completely silent, and Yam Hamel was telling them the importance of the mother language. All the old men from the village were sitting on the back benches of the classroom to thank Yam Hamel for his 40 years faithful service as a teacher. The French reached late, but he was asked by Yam Hamel to sit properly at their seat. Those days, Yam Hamel brought writing dictation, and there were the round letters written France Alsace on them. Yam Hamel blamed the French for not learning their own language and also his parents to in the engage him in factory or mill to earn some money. He also blamed himself for not paying proper attention to his study, rather to hand over him the work of potting plants, flowers, etc. And the French was also busy to play and in other works. Young Emil explained them the importance of the mother language as far as the French language. He described that French is the most beautiful, logical, and clearest language in the world, which can be learned easily. And the mother language
is considered a key to the present when the people are enslaved in a country. So hence they must learn the mother language and as long as possible they must guard it. So in this reference, E.M. Hamel emphasized the importance of the French language, which is a mother language. And when he declared that it was the last lesson as the order from Berlin that only German language will be taught in the school of Alsace and Lorraine, E.M. Hamel declared that it was his last lesson. And as soon as he declared these words, the French had a thunderclap in his heart, as he had started to learn French language somehow to read and write. And now the declaration that E.M. Hamel will not teach in the school of Alsace, rather a German teacher will teach in the school of Alsace was a matter of sorrow for him. Everybody was in tears on that day to listen this kind of words. And they were sitting on the back benches of the classroom to thank him Hamel for his 40 years faithful service as a language teacher and to show their respect for them. E.M. Hamel felt sorry for the people of the Alsace for not able to teach them how to read, write, and speak the French language. But everybody was blamed for it. The people of Alsace had the problem that they always say that there is enough time. They will learn it tomorrow. But E.M. Hamel reminded all of them that it was their words, and now when they had reached now that they have they had no time to learn their own language. And E.M. Hamel finally finished his lesson, and in the last he wrote on the board Vive la France and was very sad to dictate his last words. Finally, the church clock struck 12, and E.M. Hamel indicated that the class was over, and everybody started in tears and thanked E.M. Hamel for his 40 years faithful service as a teacher. And now this lesson, the last lesson, teaches us the important thing that we must not postpone the important thing is education for tomorrow, because education is considered the most important thing in life to develop ourselves, to develop the skill of communicating language and to set a new plan and strategy for the next view or ideology. When the people are enslaved in a country, it is the only mother language which can help us to communicate with each other, to set a strategy to fight against those rulers. So hence the lesson comes to an end with such kind of ideology. And for the detailed description in the lessons, I shall discuss the next day line by line strategy as well as the explaining ability and also the important questions based on this chapter. So for those students who are desirous or curious to learn the important lessons from section D, from post section, and then after the poetry section, then the supplementary section, and with the best strategy can connect to my own channel, your own channel rather, Mr. Official, and hence you will find also the important clues for the oncoming UP board exam as well as the CBSE and other boards exams. And for UP board students, I have started as far as the Hindi perspective. I know that Hindi is uh, just kind of contrasting or opposite approach as far as the preparation is concerned. Because one time you are going to read it in Hindi and the next time you are going to translate it. So you have the double labor as far as them. But as we know that the Hindi origin, so that's why I shall also dictate the things in Hindi and then after to finish it with a summarized approach
and the easiest way to explain the things, and then after the question and answer to prepare well for the oncoming board exam. So I appeal the students to join this session as far as it is important for the strategy of the board exam, and I hope all of you will join this and the video will be helpful for all of you. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि सबसे पहले आपको इस पाठ के बारे में हिंदी में समराइज किया गया और उसके बाद में अंग्रेजी में समराइज किया गया। इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, कोशिश करूंगा कि मैं लाइन बाय लाइन आप तक पहुंचूं और जो वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करके इंग्लिश में फिर उसके बाद में हिंदी में बताने की कोशिश करूं, ताकि आपको जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण तैयारी कराई जा सके। क्योंकि डेफिनेटली होता क्या है कि हिंदी मीडियम में एक बार आप हिंदी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश, क्या होता है कि दोहरा आपको मेहनत करना पड़ता है और यहाँ तक कि जो कीवर्ड्स हैं वो हमसे गड़बड़ हो जाते हैं और हमें जो सटीक आंसर लिखने के जो वर्ड्स हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो डेफिनेटली उस स्किल को भी ध्यान में रखते हुए डेवलप करना है। इन सारी चीजों को आपको वीडियोस में मिलेगा। तो आई होप आप सब लोग बिना किसी देरी के चैनल से कनेक्ट हो, ताकि आप तक हम हेल्पफुल वीडियो पहुंचा चुके। शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको लाइन बाय लाइन इस पार्ट की चीजों को समझा जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मोमेंट what is coming, and have a colorful day of this important festival Holi। प्रेम से मिलकर खेलें, एंजॉय करें और विवादों से दूर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर। Dear students, now we are going to discuss about the important lesson, the lesson number 2, the last. In this important narrative,